um, record button. So what I'm gonna do here is, first I will request all of you to mute yourself unless and until you have a question, and if and when you have a question, you can ask me there and there itself, okay? Or if it is something which I'm gonna talk about later, I will let you guys know. So, today's agenda is basically to have a masterclass on how to build the low risk scanner, low risk on strong stock scanner. Okay, so this is basically a pullback scanner. So, first of all, the idea of low risk, there are two things here. First of all, one is low risk, one is strong stocks. Okay, so in scanner, in charting, you cannot code the relative strength directly. How Market Smith gives you the relative strength number, anything above 80 is good, which means that anything about 80 is means the top 20% of the uh, highest performing stock, okay, in 50 and 200 a day time frame. Now that you cannot code, but we get through around that situation, and I'll talk exactly show how. The second thing is low risk. Now there are three things which I think low risk is, right? So strong stocks come back and bounce off from 50 DMA. Stronger stocks comes and bounce off of the 20 DMA, and uh, the strongest of stocks, bounce off from the 10 DMA. All right, and what I have coded is basically stocks which are now sort of coming back and resting in these three key moving averages. Okay, so let's go and now look at the Homma low risk pullback scanner. I will basically go through one by one of all what each code stands for. Okay, and before that, let me make myself clear that, see, whenever you are making a scanner, there are two kinds of scanner. One is basically a trigger scanner, trigger entry, which means as soon as any stock comes in the scanner, it is ready for a buy. This is not that kind of a scanner. This is a scanner for watch list scanner, which means that you run this and you get a bunch of stocks, and almost all of them would be like in whatever you describe that, and from there you choose the best looking ones. Now there will be some people who will not like the fact that there are 100 names in the scanner. um, um, so I will also, for especially those people, I will also show how they can change a few things to have a little less number of scanners. But again, if you do that, I don't know if that actually serves the purpose or not, because the idea of a scanner is you can run anytime. Okay, you can run this anytime, but yeah, end of the day works. The idea of the scanner is to get a bunch of stocks to see to, from there you can to choose yourself. Okay, so you have to maintain a balance between getting a handful of stocks like 10 to 20 versus a lot of stocks like 100 200, correct? Now, having said that, let's now begin to uh, um, you know understand what I have coded in the scanner. So the first few lines is basically to uh, get rid of all of the what I'll do is I'll quickly close. So scanner may, what you can do is you can also switch the switch it on and off. Okay, so I'll first switch everything off, and then one by one we will open. So number one is basically daily close is greater than 20. So anything which is lower than 20 price will not come in the scanner, and that means almost 2000 stocks in the NSE stock market, in listed on NSE, right? So ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे. Next thing we do is market cap is greater than equal to number 1000. So this 1000 is in crores. Now this is very important because for someone who has a smaller portfolio, let's say couple thousands to couple lakhs or so, you can still trade a stock which is around 1000 crore market cap or so, right? But if someone has a portfolio which is in multi crores, like 100 से ज़्यादा crore, तो definitely
liquidity itna nahi milega in the micro and smaller stocks. So this is important. And this is very the lowest limit sort of, इससे नीचे आप trade मत ही करो तो अच्छा है, you know. And so if you add this market cap wala thingy and you just run this one, you will see that by 50% the stocks have reduced. Now there is only 1200, 40% reduced, so there's only 200, 1200 stocks in there. Now the second one is I want all the stocks to be at least 50% up from their yearly lows. Okay, so this is the daily close is greater than equal to the minimum in 52 weeks and into 1.5. So this basically says that it is basically a piece of Minervini trend template where, so here again you can say okay, 30% up from the bottom bhi chalega. So in this you can put 1.3. You say if you want ki double hi mere ko chahiye, so then again you will have to change this. But for now, 50% from the yearly lows is fine. So once you put this in and scan, then you will see that from 1200, now we've again halved the number of stocks. So abhi kitna hua? 655 stocks out of about 2000 stocks in like 22, I don't know exactly, about 2000 stocks in the NSE. Correct? Pakka? Everything is good until now. So let's move on then. So now the next one here, what I am trying to do is, this is the liquidity filter. So this is additional liquidity filter on top of the market cap वाला filter. तो ये टर्नओवर है. तो बेसिकली 20 डे का टर्नओवर माने कि क्या, कि कितने पैसे का स्टॉक बिक रहा है, हाउ मच मनी, हाउ मच टोटल अमाउंट ऑफ, व्हाट्स द टोटल अमाउंट which gets changes hands in the stock daily. So for that I've used either 20-day ka average or 50-day ka average. So what you do is daily 20-day SMA volume into 20-day average price should be greater than equal to, now how much is this, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 1 crore. Again, this is minimum. Okay, for people who have higher portfolio, they generally, instead of 1 crore, they go for at least 10 crores or something. Okay, but liquidity is again very personal thing. You so for example, someone like Afzal Lokhandwala will not trade something which is less than 5 here. Okay, but again, those people he might have a bigger portfolio. This liquidity will suffice for a general smaller trader like me, and that's why I put this. It's a very minimal number. Okay, so this is the liquidity criteria. Now let's see how many stocks are coming in the scan. 651, not much reduction. So which means that this criteria is already making sure that we have enough liquidity at least. So again, I am repeating this again. If you have a larger enough portfolio, you should change this number to at least 5 crores or 10 crores. Okay, now let's come to the meat of the scanner. This one is basically saying that, hey, so this one is where I take care of the strong stock part. Okay, so what's a strong stock? A strong stock can also be defined by the general performance of that stock in, let's say, a couple of major time periods. So the first line is, if in last 20 days the stock has rallied 25%, okay, then that's a very strong stock. If in the last 50 days the stock has rallied 50%, that's also a very strong stock. If in the 100 days the stock has doubled, that's also a strong stock. So if any of these three things has happened in the stock, I fucking want that stock in my scanner, right? So let us see then, in this, out of 651, how many stocks are actually strong stocks. So if you run this, then you see that, hey brother, out of 600 stocks, there are only 212 stocks which are actually strong, which means they have actually outperformed or like gave a decent enough performance. Okay,
All right, so then moving on, what is the next segment here? The next segment here is basically now what you will see is that there are so many stocks which will which will get pick up in this scan. They are actually the stock is actually on a longer term, it's on a downtrend, but just in the last few 1 week or so it has like like 3 4 दिन लगातार bam 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 20% 20% 10%, and like it is now coming in the scan because in the last 20 days it has actually given a 25%. But again, if the major key moving averages are, if the stock is still below the major key moving averages, which is basically 250, and if the 50 is actually पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, देन दैट्स नॉट अ गुड स्टॉक. तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, उसको निकालेंगे ब्रदर. सो दिस इज द नेक्स्ट वन वेयर आई एम सेइंग दैट द स्टॉक 50-day मूविंग एवरेज टुडे हैज़ टू बी हायर देन 50-day मूविंग एवरेज 50 day ago. समझ रहे हो? विच मीन्स लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हियर Jubilant Industries 50-day moving average right now is at 152. 50 day ago somewhere here, I don't know whenever 50 day ago that would be, देखते हैं ना, 50 day ago 50 bar ago was here, right? So 50-day moving average itself is climbing, which means that it's a very strong stock. Like, but there are so many other stock which are like, for example, JTL Industries. Okay, so JTL Industry might get picked up with this stock because what happened was JTL Industry in the last 20 days actually gave about 20-25%, right? करेक्ट. तो अभी इसको भी पिकअप करेगा अपना स्कैनर. लेकिन अगर आप देखो JTL इंडस्ट्रीज़ में 50-day मूविंग एवरेज इज क्लाइंबिंग डाउनवर्ड्स. तो मेरे को नहीं चाहिए ऐसा वाला स्टॉक. तो मैं क्या किया, 50-day अगो मूविंग एवरेज इज एक्चुअली हायर देन राइट नाउ. Okay, so this helps me again clean up a lot of garbage. Okay, so and again in other time frame also I do the same thing. 200-day moving average भी मेरे को ऊपर वाला चाहिए 50-day time frame में. Okay, you can actually get rid of this, but I'm still keeping it. Okay, so if one of these actually any करते हैं, छोड़ो all ही करते हैं, तो दोनों चाहिए मेरे को, right? Let's right now only consider this one, like 50-day moving average is rising. So if you now run the scan, out of 200 and I think 20 something, there were like up 30 odd stocks which were actually not really great and were sliding down in the 50-day time frame, right? So now they are also gone. Now we are getting there. Now 169 stocks. Okay, weekend scanning के लिए 169 काफ़ी है, मतलब इतना हमें मेहनत कर लेना चाहिए, right? Okay, so now let's again get more further and it now gets more interesting. Let's quickly check कि 200 वाला भी डालने से कितना आता है. 169 से 169 मीन्स लाइक 50 में अगर वो ऊपर चढ़ रहा है तो 200 में भी सॉर्ट ऑफ ऊपर चढ़ेगा in general bullish conditions. Okay, someone has a question, I'll quickly check. Let's go. Of course, so we run the scanner. Of course, screen not visible. Anil, you should check in again because I think screen is visible for rest of the people. I'll wait for you. Get out and get in. Okay, so where were we? So now so out of 2000 stocks we are now to 169 stocks. Okay, we haven't started the meat of the um, of the scanner yet. Now what I also want is I still want to make sure that the stocks which I have selected are good stocks. Okay, great, Anil, thanks. um, so what I have done is I have basically said ki I want stocks which are uh, around more than 25% of the 52-week high, right? This is again a piece of Minervini trend template. I don't want anything which is slided below 25% from the or full 52-week high, because 52-week high से 25% ज़्यादा slide किया मतलब थोड़ा there is weakness, correct? So I don't want that. Okay, but again अगर 50-day high से 25% नीचे चला गया तो भी नहीं चाहिए, ठीक है? So any of this if it is around 25% of the 52-week high
और 50-day हाई चलेगा मेरे को. ओके, सो इफ़ यू देन ऐड दिस एंड सी 169 से फिर 10 स्टॉक्स फिर निकल गए इधर से. ओके, नाउ getting to the meat of the scanner now this one is a very underrated segment here, which tells me that anything which has climbed more than 5% in the last 5 days or 10 days मेरे को नहीं चाहिए. Okay, I will repeat this again because this is many people will might not understand this because this is underrated segment. What I'm saying is anything which is given more than 5% in last 10 days or 5 days, I don't want. Now the question is, Prakash, why do you not want that? Because I don't want something which is wedging up. I am trying to get us, I am trying to get stocks which are pulling back, not wedging up, pulling back. Barabar? Wedges are not great. So then when I run the scan, then 55 से 122 हो गया. ठीक है, अभी मीट पे तो आए ही नहीं है. नाउ दिस टू filters are the meat of the scanner. Okay, now I will open both of them because both of them are necessary. Now एक एक करके देखते हैं. The first one is where I'm coding pullback to 50%. 50 SMA. Now what I'm saying is the stock has pulled back to a range which is 10% of the 50-day SMA. So that means daily close by daily SMA 50 is less than equal to 1.05. मतलब 5% उसके ऊपर होने से होएगा and then नीचे वाला is 5% below होने से भी होएगा. Which if once these two segment is put together, it will only scan for stocks which are at a 10% band, at a 5% band around the 50-day moving average. Okay, so now you run this scan and now you see from 122 only 28 stocks are there. समझ रहे हो? Now yeah, so people who don't like more number of stocks, 22 भी बहुत ज़्यादा है अगर आपके लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो बैंड है इसको और छोटा कर सकते हो. ठीक है, 1.5 को 5% हो गया. आप चलो आप 2.5% का बैंड ले लो. ठीक है, तो 2.5 करने से 0.975. ठीक है, तो नाउ यू सी आउट पहले 28 था, अभी कितना मिलेगा आपको? कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा? कम मिलेगा, राइट? ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रिक एंड दिस इज़ नॉट इवन अ गुड ट्रिक. ठीक है, बट सिंस you see, I'll give you what you require. Okay, because trading is very personal. I will not, मैं अपना will आपके ऊपर नहीं थोपूंगा. ठीक है, अगर आपको बस एक स्कैनर चाहिए, ऐसा वाला स्कैनर भी बना के दे दूंगा मैं. ठीक है, तो what I'll do now is I will explain a little bit more, but just to show the how the scanner works, what I'll do is I'll quickly save this so that no, I'll not save this. Wait. So I'll copy this 13 names onto the trading view watch list. Okay, and we will quickly go through these names and आपको दिखेगा क्या मस्त टाइट 50 डे वाले स्टॉक्स ही आपको नज़र आएंगे. IWEL very tight to the 50 day moving average. Mangaluru refinery and petrochemical very tight to the 50 day moving average. Hudco very tight. Kalyani steel very tight. Archid Pharma, I mean tight in the sense like it's at around 50 day moving average. NCC 50 day moving average. Jindal came, Jindal saw is also at 50 day. Skipper 50 day. Latent 50 day. Vakranji. Ganesh Housing 50 day. Paisa Lelo Digital also at 50 day. Jaiprakash also at 50 day. Okay. Now what I will quickly show you here is I really don't like very tight. Okay, because मेरा सिस्टम ये नहीं है कि टाइटेस्ट स्टॉक मेरे को पकड़ना है. ठीक है, बिकॉज टाइटेस्ट स्टॉक पकड़ के आप कुछ ज़्यादा कर नहीं पाओगे, बिकॉज समटाइम्स नॉट वेरी टाइट स्टॉक्स विल ऑल्सो गो एंड मेक द मूव. सो आई नीड अ डिसेंट नंबर ऑफ. सो ये अब 28 जब आ गए ना, तो आई अगेन कॉपी दिस एंड सी when I release the tightness a little, not tightness is a wrong word, release the stocks around 50 DMA a little bit, you'll see there are so many good stocks we were missing here.
Godfrey Phillips is a very good 50-day this one stock. Um, IRB Infra is a very good stock which is pulled back to 50 days. So we were missing this just because we tightened the conditions. Okay, Inox Green Energy we are missing. This is, I really like. I really like this one. This is a great. I mean, the confirmation reversal from this pullback would be a great place to enter as a क्या बोलते हैं as a positional entry. Prestige Estates is a fucking amazing stock right now. So yeah, कहने का मतलब ये है कि बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स भी ऐसे आएंगे. ठीक है. नाउ गो बैक टू व्हाई वी केम टुडे एंड फिनिश दी एक्सप्लेनिंग द रेस्ट ऑफ द स्कैनर. नाउ यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो हो गया पुल बैक टू 50 डे में. मेरे को क्या चाहिए, पुल बैक टू 21 भी चाहिए. तो ये दोनों निकाल देता हूँ. तो पुल बैक टू 21 में मैंने बहुत रिलैक्स कर दिया. पहले क्या था, 5% का बैंड दिया था. पुल बैक टू 21 EMA में मैंने 10% का बैंड दिया है. 1.1 देख रहे हो यहाँ पे, 0.9 देख रहे हो यहाँ पे. तो दिस इज़ अ 10% का बैंड है. तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स चाहिए. ठीक है, मेरे को इतना मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना है इसके साथ. ठीक है. तो व्हेन आई रन दिस स्टॉक I'll see that the number is again gone back to 110. And then, so again, here's a very cool catch, okay? So the third one is saying that daily close by again 10 अगर कोई चीज़ 10 SMA के आगे पास में मंडरा रहा है तो वो भी मेरे को चाहिए. तो you basically run it and then you will see 120 stocks which are these 120 stocks में आप क्या देखोगे कि they are either pull back to 10, 20 or 50 and they are also strong stocks because strong stock के लिए हम सारे प्रबंध कर लिए आगे. ठीक है. Now if you are again not happy with अरे बैंड स्टॉक्स 120 कौन देखेगा, राइट. व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन से इज़ मेरे को ऐसा नहीं चाहिए बबुआ कि 10, 21, 50, मेरे को ऑल ऑफ देम में चाहिए. सो एनी से आप ऑल कर दो यहाँ पे. सो नाउ द स्कैनर विल प्रोवाइड यू स्टॉक्स विच आर पुलिंग बैक टू 10, 21 एंड 50. पहले क्या था, 10 और 21 और 50. ऑल जब कर दोगे यहाँ पे, स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर इंस्टेड ऑफ एनी, इट नाउ बिकम्स एंड, राइट. So if you run this one now, you will see again you will find 28 stocks which are very tight and which are also now in a setup which is called launchpad. Launchpad कौन बोलता है, वो ट्रेडिंग व्यू वाला बंदा बोलता है. But anyways, it's a legit setup. And now if you see these, you copy them to trading view and I'll show you what I'm trying to tell you. Okay, you clear the list, put this back again and you will see that all of these stocks, in all of them, they are currently, they are pulled back to or getting tight, whatever, to all the three key moving averages, which is the red one is the 10, the yellow one is the 21 and the 50 is the green one. Okay, so this is again legit, matlab bahut khatarnak. Okay, again I am not finished yet guys. Okay, and the scanner is gonna be awesomest. So all of these stocks are like, again like there will be here and there एक दो कचरा स्टॉक फिर भी आ जाएंगे स्कैनर पे, but 99% of them will be like really fucking amazing stocks, low risk on strong stocks. Okay, that's all we want. Especially at a time when markets are not as bullish as one might have seen in the last 6 months or so. All right, so I'm just so people should be now happy with the number of stocks I have in the this one. Okay, so again just for because my idea of the scanner is to find you a bigger bunch of basket of stocks from where you can manually go and choose. So I will now again relax that thing to any. Okay, now अगर आपको अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है तो यू कैन से कि डेली परसेंटेज चेंज मेरे को 5% से ज़्यादा बड़ा वाला माल चेंज नहीं चाहिए. तो यू कैन अगेन यूज़ दिस एंड 1 or 2 number will again decrease. So just one decrease today because not many of them which pull back were also very bullish. Now if you want on this कि ठीक है
What I want is strong stocks, pull back to a low risk area, but I want stocks which are not older than 5 years. So you can also put the uh, IPO wala segment on. So here I'm looking for uh, strong stocks which are pullback at low risk but have been IPO within 5 years. So if you run this, you will see that these 18 stocks are all very young stocks, IPO stocks. Okay, you can see eMudra, Inox, Datta Patterns, BEML, Epic Gral, Inox Energy, Shaili, Anantaraj, Railtail, Mac Power, IRFC, Latent View, KPI Green, E2E, DP Abhushan. Right, so this is one another very nice way um, for you to even like get lesser names. Okay, now there is one underrated way to not use this, and out of the 120 stocks itself, what you can now do is you can place some tightness criteria. Okay, so I'll just quickly copy this. This is my epic tightness, this one scan, and then I'll just put this. Okay, now I'll explain it to you what is this. Okay, so the daily ATR is half than that of the 20-day ATR. The daily ATR or the daily ATR is okay. सब बंद करते हैं अभी, ठीक है? तो so these are these are the ways you can scan for tight stocks using ATR. So if a daily ATR of a stock is half than that of the 20-day average, you will get tight stocks. Okay, so if you run this and okay, you know what, out of 119 stocks इतना खतरनाक tightness किसी में नहीं है. Okay, so these two will also not work so well because यहाँ पे देखो बस one name is tighter, as tight as you want. Okay, so then you will use the other two, which I also use in my Homma Kela scanner, whereas I use Bollinger Band का width का percentage. So मैं क्या बोला कि Bollinger Band 20-day Bollinger Band का width का percentage अगर 10% से नीचे रहा या equal to 10 रहा तो उतना टाइट मेरे को चलेगा. ठीक है, सो व्हेन यू रन द स्कैन what you see is, oh, there are two names which are very tight. Okay, again this is again very tight. Now मेरे को और क्या चाहिए, like let's say this is another one, daily BBW percent is less than equal to ADR 2.5 times of the 20-day ADR. Okay, so if you run this again, this is another way you can scan for tightness. There are like 2%. Okay, so what you can do is, if for example having this not having the tightness scan is giving you a number which is not manageable for you as per your liking, then what I would say is you can add any of this and you know play around with the tightness. तो आपको 0.5 ही क्यों चाहिए, 0.75 लगा लो. मतलब इतना ज़्यादा टाइट स्टॉक लेके भी क्या करोगे, यू नो. सो अगर आप 0.75 लगा लो तो यहाँ पे दिखेगा you will now have a lot of scans. So 30 is in my opinion a manageable number. Okay, so I'll yeah. So that was the scanner, guys. That concludes the Homma low risk pullback scanner wala masterclass. I will take questions now. Sure, Ajay, you have a question? Go ahead. Okay. Before you start, hey Ajay, before you start, let me read the comments here. Okay. Brother, how is the TradingView Scanner 2.0 in your view? Shubh, I have not used the TradingView Scanner, so I will not be able to tell you. Can you repeat this again? Pradeep, can you repeat what again? Bhai, if we don't have TradingView Premium. Yes, Pradeep, do you want to repeat your question? Yes, you are loud and clear. Anji. I'm not sure if I remember the line which I said after that. Okay. Hi Manish.
wedge. Yes. So yeah, you are when you are scanning for pulling stocks that are pulling back to 1021 and this one, you expect you are I'm expecting that I want to look stocks which are actually pulling back. No. तो 5% 5 दिन में आ गया तो वो दैट विल जनरली बी अ वेजिंग पैटर्न. तो आपको नहीं चाहिए वेजिंग पैटर्न, तो उससे निकल जाता है. हाँ, एग्जैक्टली. एग्जैक्टली हमें वेजिंग वाला स्ट्रक्चर चाहिए ही नहीं भाई. नहीं चाहिए. चीयर्स. Adnan Khan is asking if bhai if we don't have trading view premium how can we copy list from charting to trading view. बहुत सिंपल है. There is a क्या बोलते हैं उसको extension. There is a Chrome extension. I will put the link in my free WhatsApp group. You just put that Chrome extension and after you do that आपके जो चार्टिंग है उसमें नीचे बटन आ जाएगा कॉपी टू ट्रेडिंग व्यू बोल के. ठीक है. इसके लिए दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम फीचर. दिस इज़ अ different feature only. um, all right, so moving on, Anish, can you explain a little bit more about daily ATR? So ATR is very simple. ATR stands for average true range, माने कि एक दिन में वो कितना भागा मतलब. ठीक है. तो देर इज अ स्मॉल कैलकुलेशन. इट्स बेसिकली द लार्जेस्ट डिस्टेंस आइदर फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू yesterdays हाई, और today's low to yesterday's yeah, today's high to yesterday's high, or today's range or something, yesterday's low to today's high. Okay. So whichever number is higher, that's the true range. And ATR can be plotted as a average. तो अब अगर आपको 5 day ATR, तो you will basically 5 दिन का average of the ATR, 200 ATR का average, तो that is the average, right? So one way to see if stocks are getting tight is to basically look at ATR. तो if you say कि आज का ATR इतना है और इसका average ATR इतना था, तो the segment which you put that is अगर आज का ATR half of the 20 day का average ATR is basically how people say this volume is significant, right? So you are looking at 50-day volume and today's volume is 200% of the 50-day volume, means like double of the 50-day volume, then it's a very significant volume, right? Similarly, ATR basically gives you the range. If today's range is half of the range of 50-day का average range, what does that mean? That means that स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट होके बैठा हुआ है, सिकुड़ के बैठा हुआ है. कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या आता है ब्रदर? कॉन्ट्रैक्शन के बाद आता है एक्सपेंशन. तो अगर ऊपर की साइड में एक्सपेंशन होगा तो दैट इज समथिंग विच यू वांट टू ट्रेड, राइट? सो दैट्स बेसिकली द ATR. आई होप दिस एक्सप्लेन्स अंकुर. Boss screener link. Boss, Shubham Boss. To get the screener link, you should go to Sakatas Homma's weekly newsletter, which is the technical take, and read today's edition, and the link is in there. So I can send you here, but I want you to do that much of mehnat, okay? And if you haven't visited the technical take, you will be blown away if you are a beginner trader. I can guarantee you that, so please go and visit there, and the link is there in the Substack. Okay. HKH means Homma Khela Hobe. Homma Khela Hobe is the only. So this is scanner for watch list, but there is a scanner for entry. So Homma Khela Hobe is the only scanner I have for a breakout entry. The free link is also somewhere in the technical take. I don't know if it is there or not. At some point of time, I had stopped sharing my screeners. Yeah, but I have two versions of that. One is a free version, which probably is there somewhere with people, and there is a version which is 2.0, which is more confirmation, less number of stocks, and that is only available to my private group members, which is HPA. If you guys need any detail about that, I'll again put that in the group. Okay.
Shubh already in the part of Substack. Go read it. Yeah. Can we access past newsletter? Of course, you can access past newsletter. Okay. After I finished all these messages, I will now take questions. Ajay, brother, what's your question? बताओ सर. यहाँ पे मतलब कौन सा सेगमेंट समझ में आया, बताएं. बताइए. ये वाले. ये भी. अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है ना इसमें क्या हो रहा है अजय, तो इसमें हम कोट कर रहे हैं कि अगर कोई स्टॉक अपने हाई से 25% से नीचे तक चला गया तो हमें नहीं चाहिए वो वाला स्टॉक. ठीक है. तो डेली क्लोज इज़ ग्रेटर देन जो 52 वीक का हाई. 52 वीक का हाई को मैं 0.75 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. माने अगर 52 वीक हाई 100 रुपीज़ है, इफ़ आई मल्टीप्लाई दैट विथ 0.75 then that become 75, right? So daily close should be higher than 75. So indirectly मैं क्या बोल रहा हूँ कि 25% से ऊपर होना चाहिए क्लोज फ्रॉम द 52 वीक हाई. चलो 52 वीक हाई का 25% से ऊपर नहीं है, चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 50 डे हाई का 25% तक होना चाहिए. सो दिस द टॉप वन इज बेसिकली कम्स फ्रॉम फेमस मिनरविनी ट्रेंड टेम्पलेट, जहाँ मिनरविनी भैया will not consider any stock which is gone below 25% from the top. Okay. And this will basically give you only the strongest stocks. The second one is where I eliminate all the stocks which are wedging up. अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या बोल रहा हूँ मैं. डेली क्लोज बाय 5 डे अगो का हाई. तो लेट्स से 5 डे अगो का हाई इज़ 105. आज का डेली क्लोज, सॉरी, डेली क्लोज इज़ 105. 5 डे अगो का हाई ही था 100. तो 105 डिवाइड बाय 100 कितना होगा? 1.05 हो जाएगा. करेक्ट. तो 1.05 तक टॉलरेट कर लेंगे, उससे नीचे होना चाहिए. ठीक है. तो इससे अगर ऊपर चला गया, मतलब डेली क्लोज इज 106, 5 डे अगो का हाई था 105, माने क्या ये प्राइस एक्शन इज गोइंग अप नाउ. तो ये वेज हो रहा है, आपका प्राइस स्ट्रक्चर वेज हो रहा है. तो मैं आपको दिखा देता हूँ. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन, सो आई विल शो यू. लेट्स डू दिस. ओके, सो आई विल कॉपी दिस एंड आई विल स्टिक दिस इन टू माई वॉच लिस्ट. मैं आपको दिखा दूंगा कि वो अगर नहीं है तो कौन कौन से टाइप के स्ट्रक्चर आएंगे. तो लास्ट वन इज़ जुबिलेंट इंडस्ट्रीज. ओके, सो आई विल गो हियर एंड मैं ये वाला बंदा इस वाले को बंद कर देता हूँ. नाउ इफ़ आई रन दिस, I will get some more stocks. So I think 20 something, 30 something. There are some more stocks now here. So copy to trading view. Go to trading view and now copy this list. So Jubilant के बाद, अयो Jubilant के बाद, हाँ एस्टर डीएम एक नया बंदा निकला है. तो अब एस्टर डीएम प्रॉब्लली अभी टाइट है, बट this is not wedging up exactly. This is actually very tight, but there are some other stocks which will at some other point of time, uh, which will be, you know, now Jubilant SRDM is not even come to 10%, right? तो generally क्या होता है, whenever you buy a pullback, you want it, the propensity of the stock to fire is higher when it actually comes back to the key moving averages. So right now this is not wedging, but this also removes all the wedged stocks. Plus it will give you stocks which are more ready, you know. श्योर दिखा सकता हूँ आपको. ठीक है, तो आप मस्त हो ब्रदर. आपके जैसा बंदा चाहिए हमें रोज़ ऐसे जो क्वेश्चन करे. वेजिंग वाला आपको दिखा दूंगा मैं. ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग. लेट्स ये ऑफ कर देते हैं.
और फिर चढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी ओके 131 आ गया है तो जाती हो गई। ओके लेट्स डू दिस। सो अभी 119 स्टॉक है जहाँ पे हम लोगों ने वेज्ड स्टॉक्स को हटा दिया है। तो अब क्या करेंगे, कॉपी टू ट्रेडिंग व्यू करेंगे। Sharda Motor is the last one. Okay. Now, if you then close this, which will now also allow wedged stocks, 119 से बढ़ के 131 हो गए, मतलब 12 नए स्टॉक्स आए हैं मार्केट पे। If you now go and see these 12 new stocks which are after शारदा मोटर्स के बाद, ठीक है। तो अब इसमें वेज स्टॉक्स दिखेंगे। देखिए ये ऑल दो वेज नहीं है बट इसमें पुल बैक ही नहीं है। ये बंदा पुल बैक यहाँ पे था इस जगह पे, बट दिस इज़ ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ ब्रोकन आउट ऑफ द पुल बैक वेयर वी वांट टू एंटर, ठीक है। तो ये बंदा को हटा दिया था। GPIL इज़ अ वेजिंग स्ट्रक्चर, मतलब एग्जैक्टली वेज नहीं है बट फिर भी ऐसा वाला स्ट्रक्चर हमें नहीं चाहिए जो कि ऑलरेडी लाइक ऑन अ मूव है। बिकॉज प्राइस अगर ऑलरेडी एक्चुअली ऊपर की ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे तो कोई आपका लो रिस्क एंट्री बनता ही नहीं है ना, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर आप एंट्री ले लोगे तो स्टॉक कभी भी फिर से पुल बैक दे सकता है यहाँ पे प्रीवियस ब्रेकआउट जोन पे, तो आपको एंट्री करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी निकाल दे रहा है। इंडस टावर ऑल्सो अगेन दिस इज ऑलरेडी इन एन अप ट्रेंड, देयर इज नो एंट्री हियर। सूर्योदय exactly not a wedging structure but a structure which you don't need. Dredging carp similarly this was the entry. Now there is possibly after 1 or 2 days of more consolidation there might be an entry but still not ready. Yeah, Quest Corp this is a wedge up structure. तो आप टॉप्स ज्वाइन करोगे, आप बॉटम्स ज्वाइन करोगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्राइंगल की तरह नज़र आ रहा है बट इट हैज़ अ स्लोप अप, राइट। सो आपको ऐसा वाला माल नहीं चाहिए राइट नाउ, एटलीस्ट दे आर सॉर्ट ऑफ ओवर एक्सटेंडेड। थॉमस कुक is not a wedge up structure but a structure where there is no pullback entry. So these are a couple of examples, but again because ये आज के structures को छान रहा है, लेकिन अगर every day if you use this scan there will be so many other wedging up structures which you will make sure will not come on the scanner because of that. Great, amazing. Thanks for the question, Ajay. All right, folks, any other questions? ये जितने भी आप ये जितने भी स्टॉक्स हैं ना शुभ, ये सारे के सारे मोस्टली दे आर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, ओके। अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा, अब मैं आपको लेट्स गेट द 30 स्टॉक्स एंड फ्रॉम देयर आई विल इन माई चार्ट शो यू विच आर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स एंड कैसी जगह पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। लेट्स डू दैट नाउ। हम्म हम्म। वो आपको नहीं मिलेगा वो, क्योंकि मेरा इंडिकेटर है, मैं बस अपने बंदों के साथ ही शेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। हाँ तो प्रीमियम वो है एंड ठीक है। तो लेट्स गो एंड नाउ लुक एट कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, ठीक है, कैसी टाइप की एंट्री आपको आएगी। एंड मैं आपको एक और बहुत ही बढ़िया वाला इंडिकेटर बस दिखाऊंगा, वो मैं शेयर नहीं करूँगा बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ओनली शेयर्ड विथ माई प्राइवेट ग्रुप, ठीक है। और ये इंडिकेटर आपको इसलिए दिस इज़ अ वेरी
गुड इंडिकेटर टू, जैसे अभी मार्केट में वो है ना, डाउन टर्न है, तो ये डाउन टर्न जब उठेगा तो दिस इंडिकेटर ऑल्सो गिव्स यू एन इंडिकेशन. सो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, बिकॉज अजय अजय ब्रो के चलते 129 स्टॉक्स आ गए वहाँ पे. तो ये वाली ऑन कर देंगे, रन स्कैन करेंगे और फिर बस 35 स्टॉक्स उठाएंगे. these 35 are the best low risk entries in very strong stocks in the market. Okay, but like I said, the one way to see the strongest stocks is RS rating. Now this RS rating might not be exactly like the Minervini, or not Minervini, O'Neill RS rating, but this is pretty close, which means that if anything in this is showing more than 80, which means that in a certain time frame 50 to 100, that stock has outperformed 80% of the market, and that's the kind of stocks which you want to be, right? So ऊपर से चलते हैं. Actually, I always want to screen stocks in alphabetical order. तो ए बी बी राइट नाउ इफ़ यू सी, ए बी बी नहीं लेना है आपको, ठीक है. ए बी बी में क्या हो रहा है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ राइट नाउ इज़ एट द हाइएस्ट. तो जनरली क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ हैज़ ए, एवरीथिंग इन द मार्केट इज सिक्लिकल, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी सिक्लिकल है. रिलेटिव स्ट्रेंथ भी यहाँ पे आके जीरो के साइड में होके फिर से ऊपर भागेगा, ठीक है. इट इज़ बाउंड टू हैपन. मतलब एग्जैक्टली अभी ए बी बी में मे भी नहीं हो सकता है, बट प्रोबेबलिस्टिकली ऐसा होगा. तो there are a couple of things which you have to see. You have to see that where in the cycle is that stock itself in the relative strength space. तो ये बंदा अभी ऊपर है, मार्स इज पॉइंटिंग डाउन. सेकेंड थिंग, मार्स जब पॉइंट डाउन कर रहा है तब आपकी एंट्री नहीं होगी. सेकेंड थिंग इज मार्स इज ऑल्सो बिलो द 9 EMA. तो मैं 9 EMA यूज़ करता हूँ, मेरे लिए बहुत बढ़िया से काम करता है, ठीक है. सो नाउ यू सी, यहाँ पे एंट्री बनती थी बिकॉज मार्स इज पॉइंटिंग अप एंड मार्स इज ऑल्सो अबव द 9 EMA, राइट. यहाँ पे एंट्री बनती थी. मार्स हैज़ जस्ट ज़ीरो से उफंद के वो ऊपर आया. एनीवेज, दोज आर हाइंडसाइड नाउ. लेट्स गो एंड लुक एट अदर स्टॉक्स. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि RS डेफिनेटली 80 से ऊपर हो. मैं तो 90 से ऊपर ही लेता हूँ, मतलब अगर मेरे को लेना है टाइप्स, तो एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्स अगर ये ज़ीरो लेवल से नीचे है तो मार्स का कलर काला हो जाएगा. तो अगेन, नथिंग अगेंस्ट द कलर ब्लैक. All I'm saying is Mars is weak, which means that your stock is weak in the last 50-day time frame, which means that probability भाई थोड़ा कम है, ठीक है. तो अदानी ग्रीन तो डायरेक्टली दिख रहा है 50 के नीचे, मार्स भी वो है, तो इसको नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे. ABB को फिर भी आप रख सकते हो, बिकॉज ABB फिर उस ABB कैन गो साइडवेज एंड देन देर विल बी एन एंट्री देयर, राइट. तो जैसे मतलब ये फॉर एग्जांपल ये टाइट एरिया आया, फिर देन अगेन, or when this tight area comes and things become better and better, you will also see my buy before breakout indicator shining there. Okay, तो उसके बाद if that is there and breakout comes, it's even better. Okay, going to the next stock, Adani. This is also again, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ, मेरा नंबर 1 फिल्टर यही है, मार्स के ऊपर है या मार्स के नीचे है. भाई मार्स के नीचे मैं मतलब आई विल नॉट सी दैट. Arvind Smart Space. Okay, this is something which is really nice. Above Mars, things are also very tight, getting tight now. This is a pivot. This is a breakout pivot. Okay, इसके ऊपर जाएगा तो एंट्री मिलेगी, एंड होपफुली जब इसके ऊपर जाएगी ना, तो ये आपकी जो मार्स है, मार्स विल ऑल्सो स्टार्ट टू नाउ पॉइंट अपवर्ड्स एंड EMA 9 के ऊपर भागना शुरू करेगी, ठीक है. तो बट होपफुली देर विल बी 2 day मोर टाइटनेस, तो और भी अच्छा टाइटनेस आएगा, इनसाइड बार आएगा, इनसाइड बार सेटअप भी बनेगा यहाँ पे. दिस इज द काइंड ऑफ सेटअप विच folks like tightness traders like Hiren Gabani and stuff they trade, right. Okay, STDM अभी नहीं देखेंगे, ये like it's around the previous high का relative strength, तो everything is cyclical. This relative strength is also a cyclical, this one. तो जब भी इसका ऊपर जाए, मतलब whenever it comes to a overextended territory in relative strength, also then you also make sure if you are looking for a low risk thing, then that's not your setup, right. Automotive Stamping Limited, ASAL, is a very good setup. Now you see what's happened. यहाँ से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर सुडोल फ्लैग का मास्ट बना रहा है. Volatility is getting tighter and tighter. There is
no one selling the stock, but then no one is selling the stock, says the stock is also not going down, which means that everyone is just waiting there, nothing is happening. A little bit of demand in this cases might can pull the stock upwards. Mars is great, this guys will start pointing up and start going up. एंड अगर आपको इसमें और भी बढ़िया वाला एंट्री लेनी है तो 30 मिनट पे जाके आप एंट्री खोजिए। 30 मिनट पे जाके ये 3T VCP बना रहा है, T1 T2 T3 एंड सॉरी ट्रैक्टर पैटर्न, ट्रैक कौन सी अच्छा प्रॉपर पैटर्न, हाँ मेरे को सुनाई दिया ट्रैक्टर पैटर्न, मैं सोचा नया वाला पैटर्न होगा। तो हाँ ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, देखिए ये मिनरविनी हैज़ डिस्क्राइब दिस पैटर्न VCP, ये VCP भी है। अगर आप क्लासिकल चार्ट इस पैटर्न की तरफ अगर नाम देंगे तो इसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो जब भी ये DTL ब्रेकआउट किया या ये ब्रेकआउट किया और 30 मिनट पे आपको अगर थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए तो 30 मिनट क्लोज पे वेटिंग कर लो, अगर क्लोज हुआ तो डाल लो, यू नो। And you can see that Mars in 30 minutes is also now at around the zero and then trying to now move up. So these are a couple of things which you have to make sure if you want to like get real amazing entry with very small risk, right? तो इसमें मुश्किल से आपको 4-5% का स्टॉप लॉस लगेगा, तो आप 20% भी अगर डाल लोगे तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं, 1% का नुकसान जाएगा। तो देखिए ऑटोमोटिव असल बहुत बढ़िया नाम है, तो मेरे 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 लिस्ट पे ऑलरेडी है, लाल थप्पा पड़ चुका है, ठीक है। तो ऐसे में फिर वट एवर गुड स्टॉक्स देन आई सेलेक्ट, मैं ऐसे कर दूंगा तो ये सारे गुड स्टॉक्स ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट डे सुबह मैं 9:30 को भी उठा, देखा कि ऑटोमोटिव असल 4% ऊपर भाग गया है, तो देन आई कैन ओपन द चार्ट एंड सी कि अच्छा व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। सो यू हैव टू हैव अ सिस्टम स्ट्रैटेजी एंड देन वंस यू हैव utmost trust and belief in that strategy, then things will become like brushing your teeth, it becomes hi Bunty ji, of course. हम्म, ऑफ कोर्स करेगा, हाँ। अच्छा, करेगा। सर मैं जो है 200 और 50 के नीचे वाले स्टॉक्स देखता ही नहीं हूँ, अनटिल एंड अनलेस मैं बहुत डिफेंसिव माइंडेड हो गया हूँ और मेरे को बस पैसा ऐसी जगह पे रखना है जिससे और गिरे ना। तो मुझे लगता है आ, मैंने तो पूरी स्ट्रैटेजी बता दी यहाँ पे 1 घंटे में। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको बस स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इंटरेस्टेड होना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स जो कि लास्ट 50 दिन या लास्ट 200 दिन में 80% स्टॉक से ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया हुआ है उसने, समझ रहे हो। तो ये जो आपने स्टॉक का नाम बोला ना कि 200 डे से नीचे है, आप एक एग्जांपल दीजिए, फॉर एग्जांपल। क्या नाम फिर से बोलिए, सिनपिन, एशियन पेंट्स, और एक एग्जांपल दीजिए, 2 एग्जांपल मान के चलते, ठीक है, दोनों देखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए एशियन पेंट्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है, 20 है, ठीक है। मतलब नहीं नहीं, रिलेटिव स्ट्रेंथ, RS रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नहीं, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है। माने कि अगर आपके कक्षा में 100 लड़के हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप, और 100 लड़कों में से 20 लड़कों के नंबर 80 से ऊपर हैं, उनमें से आप भी एक बंदे हो, आपका नंबर है 81, ठीक है। तो 80 लोगों के मार्क्स आपसे कम है, तो आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ का नंबर हुआ 80, समझ रहे हो। तो एशियन पेंट्स मार्केट में
बस 20 बंदों से ज़्यादा रिटर्न बना के दे रही है। तो आपको क्यों देखना है सर एशियन पेंट्स? एशियन पेंट्स ऐसा घोड़ा है जो अभी भाग ही नहीं रहा है, तो आपको क्यों लगाना है ऐसे घोड़े पे पैसा सर? अरे सर, आपको ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए तो फिक्स डिपॉजिट में चले जाइए, उधर बिल्कुल नहीं गिरेगा। उधर आपको 100% 6% मिलेगा। हाँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसी वाली थिंकिंग वाली स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप यहाँ पे मत जाइए, आपको मिल जाएगा वो, बैंक में जाइए आप। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। भैया आप बिल्कुल सिंपल है वो, ज़्यादा समझ आप, आपको मैंने समझा दिया। देखिए उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। और ये भी अंग्रेजी में बोल रहा हूँ इसलिए रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब वो वो आपको बहुत चीज़ है। देखिए अगर आप सिंपली एशियन पेंट्स का 50 दिन का वो देखिएगा, 50 दिन में एशियन पेंट ने कितना कमा के दिया आपको? -4%। देख रहे हो इधर? 20 दिन में कितना कमा के दिया? -1%। अगर इसकी तुलना में अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एबीबी इंडिया से कर लूँ, एबीबी भी इंडिया ने 50 दिन में 44% कमा के दिया आपको। तो हो गया ना, हो गया ना, समझ रहे हो? तो ऐसे ही अगर, नहीं लंबी का घोड़ा नहीं है, उस उससे बस इतना पता चलता है कि 50 दिन में इसने इतना मार्क लिया है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि 100 स्टूडेंट के अगर सबके मार्क्स देखे जाएं तो 20 स्टूडेंट्स ने 80 से ज़्यादा परफॉर्म किया है। तो 80 से ज़्यादा मतलब 81, 85, 99, किसी का 100 भी हो सकता है, 90, ठीक है। तो दोज गाइज आर हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले बंदे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको भी पास होना है मार्केट में, ठीक है, तो आप 80 वाले कक्षा वाले स्टूडेंट के साथ दोस्ती करोगे या जिसके 20 अंक आए हैं? आप बताइए मुझे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप फिर एशियन पेंट्स पे आप नज़र हटा दीजिए, उस पर कोई आपको अब बनेगा नहीं अभी। सर बंटी सर, बंटी सर ऐसा नहीं होता है सर। यहाँ पे 40 लोग बैठे हुए हैं, हम कुछ और बात कर रहे हैं। आपसे हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और दिखा रहे हैं, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। तो अय्यो, कैन वी कैन वी जस्ट फिनिश वेरी क्विकली गोइंग थ्रू द लिस्ट? बंटी जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ, थैंक्स। Okay, so you see, Indraprasth is a really great stock. When the breakout happens, you make sure that Mars is also gonna go up. Okay, this is also a high tide flag. This is the setup which I trade. Lloyd's Engineering, amazing. Like OMFG, it's also at and around zero, which means that there's a higher chance. And always look for RS rating. Almost all of them would be more than 90, 95, MRPL 97, NCC 95, ऑयल इंडिया 97। मतलब 80 के नीचे तो हम देखते भी नहीं है। ओ एफ एफ एस, दिस इज बिकॉज एट 50 एंड 200 इट हैज़ डन रियली वेल। दिस इज दैट्स वाई इट्स स्टिल शोइंग 97। ऑर्किड फार्मा 97, स्किपर 96, Sundaram Fastness, Finance, really amazing stock. Broken out, now pulling back to the breakout zone. When the breakout happens, the Mars has to point up. Always remember this, guys. Mars has to point up. Really nice. Infibeam नहीं देखना हमें। Gone below zero, gone below 50 नहीं देखना। Jubilant Industries, one of the best, one of the best low risk setup right now in the market. तो आपको क्या करना है? आपको, if you don't want to miss this, you can either put a GTT above this, or if you want to punch the order live, you take this guy and just put it here. On Monday if this break out, then यहाँ पे टी 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 आपको पता चल जाएगा कि जुबिलेंट इंडस्ट्रीज इज गोना ब्रेक आउट। बट अगेन द कैच हियर इज
this 5% stocks, they will move in circuits. Okay, so that's why in 5% stocks, if you want to get an entry, always use an anticipation entry, which is probably the right time now. Again, this is not a stock recommendation channel. This is just, SMS Pharma. I don't like it, partially because, like, it's already in a uptrend. There is no big base. Always make sure that there is at least a 20-day wala base. But this is also a also ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट. कैसे पता? बिकॉज मैं बहुत देखता हूँ ये, मैं बस चार्ट ही देखता हूँ. तो ये ऑल टाइम हाई है, बट आई वुड स्टिल वांट अ वेरी गुड कंसोलिडेशन हियर, अ लंबा बेस, एंड देन गेट एन एंट्री, एंड एंड दोज काइंड ऑफ नेम्स, थोड़ा लंबा बेस वाला नेम्स, आई मार्क इट अ लिटिल डिफरेंटली. पिंक, यू नो. So ABB we've already gone through. Adani नहीं देखना, ये नहीं देखना है. Engineers India, this is a good one, but still it's not ready because relative strength is not very strong. Okay, Godrej. Hey Kunal. Inverse head and shoulders. Yeah, it is. It is. It's just that I really want to get a little bit, like, I don't, if I were to enter now, I wouldn't enter like anticipation entries which are below zero Mars, right? Yeah, 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 yeah. But it's a very low risk and good stock. Great point. Hey, so Godrej Industries also again, um, pulling back to the 21 EMA, and always look at the pullback quality. Pullback में कितना volatile हो रहा है प्राइस? बिल्कुल ही नहीं हो रहा है. पुलबैक वॉल्यूम्स कैसा है? बिल्कुल ही नहीं है, तुच्छ तुच्छ निम्न, all those, right? I love IRFC, but right now my 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 system doesn't allow me to look at IRFC. And what is this? Numero uno, ज़ीरो से नीचे है. भाई आउट परफॉर्मिंग नहीं है, ऑल दो RS86 है, बिकॉज भाई ने 200 दिन में मचा के रखा था, इसलिए वी स्टिल हैव ए गुड RS रेटिंग. बट अगेन 50 day वाला परफॉर्मेंस मैटर्स मोर टू मी बिकॉज आई एम अ स्विंग स्लैश पोजिशनल ट्रेडर, राइट? ICIL is decent. No, nope. Again, यहाँ पे थोड़ा सा, like this, the this is, I mean, this is okay, can do well, but again there is something which I don't like. So Shobha is a good one. It's getting now going sideways. ज़्यादा pullback नहीं हो रहा है. Still above the key moving averages, and also from a stronger sector. Yeah. So you see, you have very small list right now, and and by the way, यहाँ पे we've already only gone through 20-30 names because we put the tightness criteria. I would say don't use the tightness criteria and then go through all the 131 names. It's a weekend. 131 स्टॉक्स आप देख ही सकते हो. यहाँ पे और भी बढ़िया बढ़िया नाम मिलेंगे आपको. गॉडफ्राई फिलिप छूट गया, कोचिन छूट गया, नैट एल छूट गया आपको, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स छूट गया, डेटा पैटर्न छूट गया, राइट? सो yeah, so it's already yeah, so in my opinion this is one of the best scanners you can ever lay your hands on. And I've also shown you through this video how you can customize the scanner according to your own need, because trust me when I say this, my scanner will not work for you because my scanner is personalized for me, it's not personalized for you. Okay, I'll stop here and move on to taking a couple of questions if you guys have. Ajay, you had a question, please go ahead. हाँ जी, आपको मैं एक तरकीब बताता हूँ. आप थोड़ा वेज पैटर्न्स के ऊपर पढ़िए, ऑनलाइन जाइए. वेज क्या है? वेजेस, वेज ऑनलाइन आप जस्ट गूगल कीजिए, आपको
बुक्स भी नहीं चाहिए। गू हाँ हाँ, तो मैं बोला ना कि एबी में अभी नहीं चाहिए। एबीबी लुक्स लाइक इट माइट गो टू फर्दर डाउन ट्रेंड, तो एबीबी हमें नहीं देखना है। ये आई डोंट नो विच वेज यू आर टॉकिंग अबाउट, बट इट्स अ पुल बैक हियर नाउ। बट पुल बैक थोड़ा, ये मार्स इज पॉइंटिंग डाउन, तो ये नहीं देखना है आपको। इसमें थोड़ा टाइटनेस की ज़रूरत है। यू नीड समथिंग लाइक दिस, एंड देन दैट ब्रेकआउट इज ट्रेडेबल, बिकॉज अभी राइट नाउ थोड़ा बेरिश है। Hmm. All right, guys. No questions. Oracle Finance, yes. Oh, for fuck's sake. अरे ओ एफ एफ एस ओ एफ, हाँ अच्छा अच्छा। Yeah, so I mean, until 2 days ago or so, see, I mean, OFFS has had a brilliant run. Um this was an EP, result based EP. But again, you can see that even before the results, insiders already knew, and we had uh, this was not a valid entry. This is for people. This is my Homma Khela indicator. Whenever there is a breakout, it lights up white. Okay, this one I would not take because Homma Khela indicator, wherein the stock is still below March 0, is not good. Okay, that's why थोड़ा time लिया. This was still borderline zero होने को, but this one was where stock clearly went above 50. This was a valid entry point, and it has given a lot. Like in the last 100 days or so, it has been such a strong stock, 96 100%. So it's normal for it to correct. um, if I were already holding this, I would sort of, I would have like, because generally this kind of trend lines, when they break and given the market conditions were not so great, I would have gone back. But now my bias is that as it is more and more coming towards the 50-day moving average, as someone in the group also rightly pointed out, that 50-day moving average after the first breakout of stage 1 base is a very high probability bounce wala base. And that's why, in my opinion, of course there is selling, but okay, this is a very good example of how to read your price action. Okay, so you can see this is a very this is like a bearish candle, 2 point some percent. This is 2%, but still a bearish candle because it has a wide range and closed at the lows. Now you see volumes. Okay, so let's say the volume was X here. Now you see the next 2 days. This was a small volume, still went below, but only the range of the candle is getting slower. 0.7, यहाँ पे 1.5. So what I am expecting is that there will be a stop volume. The stop volume में क्या होएगा? There will be a very small size candle with a very big volume, and that would basically mean that whatever supply is coming in the market is getting absorbed and price is not going to move down more. I believe that zone is going to be approached very soon, somewhere here. Okay, and once you get a support and then goes back up, uh, that is a valid area to trade. Eh, Yes. Again, like for example, let's say it can come back here and then find a base and then break out, and then iske baad there can be so many other kind of patterns which might form here, right? It either might form a constructive pattern and then again break out,
or it might be a double bottom and breakdown, or it might like be a bigger long enough flat base rectangle kind of a thing. So we can't have that kind of a predictive power. At least I don't have that kind of predictive power. So I go like one candle by one candle, and just great. Thanks for the question. And just embrace the uncertainty, folks. If you don't embrace the uncertainty, like you will never be able to make as a trader. uh, I can give that in writing. All right. If you guys don't have any questions, um, Ashokji, you have a question? Yes. Okay. So I have an in-house Pine coder in my group, um, and I have modified that to make it like this. Cheers. And I believe that there are certain indicators freely available in TradingView, which gives the RS, but I don't know the name and all. No, no, no. The rating, no. The rating is, uh, yeah, I love this. I mean, I tell this to Nitin every single time I talk to him. Uh, Very nice indicator. Yeah, everyone should use Mars and only Nitin's Mars. Not Nitin, yeah. But I'm sure if Nitin sees this, he can also customize it for everyone. Cheers. All right, guys. Um, Hi, Balaji. What I'm using is, what do you mean by paid? It's not paid. If you want to get all my indicators, not just the Mars, but I also have a couple of other indicators, and I would like to take the liberty to show them. It's called Homma Endgame. So Homma Endgame is again a bunch of indicators you can customize, and a BVHB, Kelawe indicator. Kelawe indicator is again this, the purple dot indicator which I was talking about early in the group in Vakranji. So, so guys, yes, this is my WhatsApp number 9481506784. Please get in touch with me over WhatsApp, okay? And I will provide all the information there, and what I do, and what's my strategy. And also please go and check out my uh, newsletter, which is the technical take at sakatas.substack.com. I share every week some very useful information, especially targeted towards beginner traders. So that's all, and let's stop this. If anyone doesn't have any question regarding the scanner, and you can also find the scanner link in today's article. Um, Lastly, yeah. Um, what more? Okay. Yeah. Thank you so much for joining, and yeah, feel free to message me if you guys have any questions. Of course, Ajay. I do these sessions every week with my group, and also sometimes here and there, whenever I get time. Yes, I would also love to do one session like this every day for free, also for the free group members. Um, just just give me a topic, and then we will freestyle in it. Again, thanks again for coming. It's good to have an audience, a group of people to speak to, and take questions.
So appreciate it, and have a good weekend. Enjoy the cricket, enjoy the heat, and hope for a good Monday. Cheers. Bye bye.